So now we are going to discuss about immune system. It's very important systems, and when we talk about immunology, so study about the immune systems. So what actually the immune systems? So immune system is broadly divided into two parts. One is your, and of course I hope everyone of you knows about what are the function of immune system. Immune system is protecting us from the harmful effects of your bacteria, virus, fungi and so on, right? So whatever exogenous substances enter in our bodies, our body immune system is taking care of it. Our immune system is destroying these bacteria, virus, fungi, whatever it is, exogenous substances which enter in our bodies, right? So immune system is particularly divided into two parts. One is innate immune system, innate immune systems, or adaptive immune system, innate and adaptive immune systems. So innate immune systems provide us non-specific immunity to the body, and adaptive immune system provide the specific immunity to the body. So if we talk about which one is stronger, of course your adaptive immune system is very strong. So in innate immune systems, there is primary line defense. There are three defense of the body: primary line defense, secondary line defense, like जो हम बात करते हैं ना कि वायुसेना, थल सेना, there are three senas, right? So like that there is a primary defense, secondary defense, right, and there is a third line defense. Third line defense is your specific immunity. Primary and secondary line defense is your innate immunities, or we call it non-specific immunities, right? So primary line defense, what comes under primary line defense? So in primary line defense, your skin and mucous membrane play significant roles. So skin and mucous membrane is a part of your primary line defense. So your skin, अगर आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाओगे, you will see under microscope there is lot of bacteria. बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं environment में, but our skin is act as a barrier to these bacteria, and वो skin हमारी prevent कर रही है, ये बैक्टीरिया अंदर enter नहीं कर पा रहे हैं, right? अदरवाइज ये सारे बैक्टीरिया अगर हमारी स्किन प्रोटेक्ट ना करे तो सारे बैक्टीरिया हमारे स्किन के थ्रू एंटर कर जाएंगे बॉडी में. सो स्किन इज acting as a primary line defense, and skin contains a proteins, and that protein name is keratin. So keratin is act as a barrier to most of the bacteria, viruses, right, so that it will not enter inside the cell through the skin. But अगर स्किन अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह ओपन है, सांस हम लोग ले रहे हैं नाक से, तो उसके थ्रू एंटर कर सकता है, राइट? तो उसके थ्रू अगर एंटर कर सकता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू. सो आवर म्यूकस मेम्ब्रेन इज secreting the mucus, and mucus contains the enzymes. Mucus contains the enzymes, and that enzymes will do the breakdown of that particular bacteria, virus, whatever. So this comes under primary line defense. हमारी बॉडी का प्राइमरी लाइन डिफेंस है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट? अगर फिर भी आपका बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया स्टमक में, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय, बट स्टिल अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इफ़ योर बैक्टीरिया, वायरस इज स्टिल नॉट डिस्ट्रॉयड, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके म्यूकस में जो एंजाइम्स हैं वो भी उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपके स्टमक में जो एसिड है वो भी उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, वो बैक्टीरिया या वायरस आपके ब्लड में एंटर कर जाएगा. इट विल एंटर इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन. Now in the blood, every one of us knows that there are cells, and particularly there is a WBC, white blood cells. So white blood cell is the part of secondary defense, and these both primary line defense or secondary line defense is a part of your innate immunity, or we also call it a non-specific immunity. तो जब अगर आपका बैक्टीरिया, वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन से भी नहीं, म्यूकस जो एंजाइम सिक्रेट कर रहा है उससे भी नहीं टूटा, HCl ने भी नहीं तोड़ पाया, तो अल्टीमेटली आपका बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, एंड इन द ब्लड देयर आर इम्यून सेल दैट वी कॉल वाइट ब्लड सेल, and white blood cell is providing the secondary defense, right? So when
these enter inside the cells, inside the blood circulations. जब आपका बैक्टीरिया वायरस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी कम्प्लेक्स, तो हम ऐसे ऐसे करके, दिस इज बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, ये बैक्टीरिया क्या हुआ, आपकी प्राइमरी लाइन डिफेंस हैंडल नहीं कर पाया, मीन्स आपकी स्किन प्रिवेंट नहीं कर पाई, आपकी म्यूकस नहीं प्रिवेंट कर पाई, और वो किसी ना किसी तरह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया. अब व्हेन दिस बैक्टीरिया एंटर इन द ब्लड सर्कुलेशन, एज आई सेड, ब्लड में आपके एक सेल्स हैं जिनका नाम है वाइट ब्लड सेल, WBC. अब सबसे पहला काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम इम्यून सिस्टम का है टू सेंस दैट दिस प्रोटीन, दिस बैक्टीरिया is of non-self. If your immune system is not able to recognize between self and non-self, so you will be in trouble. आपकी कोई बाहर से सब्सटेंस आया है, आपका इम्यून सिस्टम उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा है, जब सेंस ही नहीं कर पा रहा है तो मारेगा कैसे, राइट? सो सबसे मेजर काम जो इम्यून सिस्टम का है वो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन. क्या रिकॉग्नाइज करना? रिकॉग्निशन. What it has to be recognized? It has, your immune system should have the ability to differentiate between self and non-self. ये इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ. आपने में भी सुना होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट? देयर इज ए टाइप 1 डायबिटीज, देयर आर ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो उस केस में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम्स जो अपने सेल्स हैं बॉडी के, उनको वो रिकॉग्नाइज करता है नॉन सेल्फ, उसको लगता है बाहर के सेल्स हैं और उनको ही मारना शुरू कर देता है. दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स ओन बॉडी सेल्स. वो अपनी बॉडी को सेल्स को पहचान नहीं रहा तो वो उसको नॉन सेल्फ ट्रीट कर रहा है और उनको मारना शुरू कर रहा है. दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेजर फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू रिकॉग्नाइज between self and non-self. So how it recognize? So on WBC are the cells, and on the cell surface there are specialized proteins. There are specialized proteins on the WBCs, and that proteins be called PRR. PRR is pattern recognition receptors. PRR, pattern recognition receptors. Pattern recognition receptor, as its name indicate, they are going to recognize a specific pattern, right? In layman terms, if you understand PRR क्या है? PRR is a specialized protein which is present on WBC. So what is its function? It's going to recognize. What it going to recognize? It's going to recognize specific pattern. Specific pattern of what? Specific pattern of exogenous substances. That's why we call it pattern recognition receptor, right? So pattern recognition receptor will recognize specific pattern, right? Specific pattern which is present on your exogenous substances like bacteria. It also contains the proteins on their surfaces, and that we call PAMP. So what are PMP? PMP is pathogen associated molecular pattern. Pathogen associated molecular pattern. Pathogen associated molecular pattern. So as its name indicate, pathogen associated molecular pattern. So these are the specific patterns or specific proteins which is present on pathogen. And what are pathogen? Pathogens are your bacteria, virus, fungi, parasites, whatever, right? Which do the pathogenicity in your body. Pathogens means जो कि आपकी disease कर सकते हैं. तो pathogens have a specific proteins, and that proteins we call PAMP. And PAMP full form is pathogen associated. Pathogen के association में molecular pattern, that is we call PAMP. And these are the pattern recognition receptors which will recognize the specific patterns which is present on the pathogens. So these PARP will recognize what? They will recognize this PAMP, right? So PRR किसको recognize करेगा? PAMP. PAMP कहाँ पे है? PAMP है आपके
exogenous substances पे, maybe it bacteria, virus, whatever it is, exogenous substances. So this PRR will recognize this PMP. So as I said, your immune system's PRR should have the ability to recognize PMP. तो आपके इम्यून सिस्टम जो आपका PRR है स्पेसिफिक प्रोटीन, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो PAMP को डिटेक्ट कर सके. सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप इज इन इम्यून सिस्टम इज डिटेक्शंस. अगर डिटेक्शन ही नहीं कर पा रहा है तो फिर आगे का काम कैसे होगा, राइट? So first is PAR will recognize the PMP, and PRR of various types. One of the well-known types is TLR. We called it toll-like receptors. Toll-like receptors. Toll-like receptor is one of the PRR. Toll-like receptors. There is a node-like receptors. Node-like receptors. Node-like receptors. These are your example of your PRR. So these are further divided into various types. TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, like that. So specific TLR will recognize bacterial pathogens. TLR 4 will recognize your virus pathogen. TLR 5 will recognize specific pathogens, right? So what are TLR? TLR is a pattern recognition receptor which are present on your WBCs, and what is its function? Its function to recognize the PAMP, and PAMP, if it's bacterial, so it will be recognized by particular type of TLR. If it's viral, it will be recognized by particular type of TLR. If it's parasites, it will be recognized by particular types of your PRR. So that is the first step in the immune systems. And this, whatever we are studying is, it's a innate immune system. As I said, two types, we are categorizing the immune system into two types. Innate immune system, as its name indicate, innate, कि जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा? इनिएट इम्यून सिस्टम. अडेप्टिव तो टाइम लेगा. अडेप्टिव का नाम ही मतलब है अडेप्ट. वो अडेप्ट होने में टाइम लेगा, 1 हफ्ता लेगा अडेप्ट होने में. पर अभी जो हैंडल कर रहा है आपका पैथोजन, दैट इज हैंडल बाय इनिएट इम्यून सिस्टम इनिशियली, राइट? So first thing is it should recognize. So when it recognize, as I said, अब इसने आपका ये for example WBC, now it recognize, this is your for example your TLR, and this is your bacterial. On bacteria there is a PAMP, right? Pathogen associative molecular pattern, and TLR is your PRR. It sense it. It's a non-self material. Now it sense it. Your WBC has sensed it. This is the exogenous substances. Now it's going to activate your further signaling pathways. That is your TLR dependent signaling pathways, or TLR independent signaling pathway. TLR independent signaling pathways, and further these pathway ultimately going to release some chemicals. I am not going in details because it's a basic lecture. So it's going to release the chemicals, and these chemicals is going to destroy these pathogens, right? There is a in TLR dependent signaling pathway, there is a NF kappa B MAP kinase pathway, and during these NF kappa B and MAP kinase, NF kappa B and MAP kinase. MAP is mitogen activated protein kinases. So these molecules will act on the nucleus, and the nucleus, we have discussed earlier as well, transcription and translation process going on, and during these processes a lot of chemicals will be released, your proteins will be released, and ultimate goal of these chemical is to destroy that pathogens which is detected by your PRR, right? That is your innate immune signaling pathway. There is another mechanism is this WBC will engulf this inside the WBC, right? And that will be called phagocytosis. We have discussed earlier as well, if you remember. There is a WBC will recognize it, and that bacteria will be engulfed by the WBCs. Inside the vesicles there is a lysosome enzymes, and this forms a phagolysosome. These bacteria will be killed by these lysosomes, and it will be removed out from the body. That will be called phagocytosis, right? So these are the various way by which innate immune system will try to kill the pathogens, right? But sometime what will happens when your innate immune system, because for example your pathogen is so strong, it start killing your innate immune system, and your innate immune system is unable to handle that. लड़ाई जब हो रही है तो हो सकता है जो ये बैक्टीरिया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके innate immune system को मार रहा है,
ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका इम्यून सिस्टम उसको किल कर ही देगा। अगर नहीं किल कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल्स वो आपका बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इनिएट इम्यून सिस्टम से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दीज इनिएट इम्यून सिस्टम विल कैच दैट पैथोजेंस, वो उसको सिर्फ कैच करेगा और उसको प्रेजेंट कर देगा। कहाँ प्रेजेंट करेगा, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, राइट। सो दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन टू द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स एंड हाउ दिस प्रेजेंटेशन विल हैपन्स, देयर इज योर APC we called antigen presenting cells, antigen presenting cells. So what are antigen presenting cells? The cells which will present, क्या present करेंगे, the cells which will present the antigen. present किसको करेंगे, adaptive immune system को, right. So antigen presenting cells can be your dendrite cells, sometime dendritic cells will act as antigen presenting cells, sometime your monocytes, sometime other cells will act as a एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो आपके सेल्स जो हैं वो हैं टी सेल्स एंड बी सेल्स, राइट। सो हेल्पर टी सेल्स को जब अगर आपका एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है जो आपने कैच की है, ये बैक्टीरिया है जो कि आपका इम्यून सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर पाया। तो अब क्या किया, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे हैव ए प्रोटीन्स ऑन देयर सेल्स दैट इज वी कॉल्ड MHC. MHC इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, compatibility complex, right. So MHC is a proteins which is present on antigen presenting cells, and MHC is of two types, MHC1 and MHC2, right. If your antigen is cached by MHC2 molecules, then your antigen will be presented to the helper T cells always. अगर आपका एंटीजन कैच किया है MHC2 प्रोटीन ने, तो आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा हेल्पर टी सेल्स को। इफ योर एंटीजन इज कैच्ड बाय MHC1 मॉलिक्यूल, देन योर एंटीजन विल बी प्रेजेंटेड टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो TC को प्रेजेंट होगा, राइट। So on helper T cell there is a proteins that we call T cell receptors. There is another proteins on helper T cell that is CD4, right. So that will be sense that it's a exogenous sense substances, right. Then another thing is when it will be presented, your MSC molecule, for example MSC2 molecule has catched your pathogens and it's presenting to the helper T cell receptor, sense it, CD4 is also there. There is a co-stimulatory signal as well. Co-stimulatory signal, B7 molecule, CD molecule, sorry, B7 is this side, B7, CD molecules. So their joining of co-stimulatory molecule is also required. If your co-stimulatory molecule is not joining with each other, your presentations will not be completed. So this is the specialized mechanism by which your antigen is presented by the innate immune cells or antigen presenting cells to the adaptive immune system, and adaptive immune systems is your one of the T cells, helper T cells. So if it presented by the MSC2 molecule, then it will be helper T cell. If it's presented by MSC1 molecule, then it will be cytotoxic T cell, right. So once it's presented, then what will happen next? So once it presented to the helper T cells, has now sensed it that this is the exogenous substances and this is the bacteria who is doing the damage everywhere in the body. Now helper T cell is going to the process of clonal expansion. So how this clonal expansions? Again it's going to activate the nucleus, transcription, translations, and going to release the interleukin, and particularly interleukin 2. The released interleukin have its receptor on the same cells. This is the interleukin 2 receptors. And now when this chemical will act on its same cells, these cells will go under the process of clonal expansions. Cells will divide and it will be expanded. Why they are expanding? क्योंकि आपको लड़ना है तो आपको फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो फोर्सेस कैसे बढ़ाओगे? आप क्या करोगे, एक केमिकल बनाओगे, रिलीज करोगे जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 जो रिलीज होगा वो उसी सेल्स पे रिसेप्टर हैं, सेम रिसेप्टर्स, IL-2 रिसेप्टर्स। जब इस पे लगेगा तो इस सेल्स को डिवाइड करेगा और बहुत सारे सेल्स बना देगा, क्लोनल एक्सपेंशन,
अब एक पहले 1000 सेल्स थे फॉर एग्जांपल, अब 1,00,000 सेल्स बन गए। अब आपने आर्मी बढ़ा ली क्योंकि आपको ये डिस्ट्रॉय करना है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग वी कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो इन योर सिलेबस that is written autocrine and paracrine signaling. So this is a classical example of autocrine signaling. Autocrine signaling means जो सेल्स जिस चीज़ को सिंथेसाइज और रिलीज कर रहा है उसी सेल्स पे सेम रिसेप्टर है उसके और उसी पे ही एक्ट करके उसको फिर आगे डिवाइड कर रहा है, राइट। सो दैट इज बी कॉल्ड ऑटोक्राइन। पैराक्राइन सिग्नलिंग मीन्स दिस इंटरल्यूकिन इज रिलीज एंड इट्स एक्टिंग ऑन अदर cells on the receptors, right. So this clonal expansion will happens. Now you have a number of T cells, lot of T cells, right, helper T cells, and these cells is releasing the cytokines like interleukin 2, TNF alpha. There are a lot of chemicals, right, cytokines. So these cytokines, what is their purpose? Their purpose is to destroy this, to destroy the pathogens. तो इन cytokines का क्या काम है? आपने इन केमिकल्स बोल लो, इनको क्या बोलते हैं आपका, इनका पर्पस क्या है? इसको डिस्ट्रॉय करना। मीन टाइम ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? साइड बाय साइड दे आर गोइंग टू एक्टिवेट योर बी सेल्स एज वेल, क्योंकि बी सेल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो ये साइड बाय साइड जो साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द बी सेल्स इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट? जो ये पैथोजेंस, इसके अगेंस्ट, राइट। So this going to form the antibodies. So that is your active immunity as well. जो हम वैक्सीन की बात करते हैं तो कुछ वैक्सीन आपकी कौन सी वैक्सीन हैं? वो वैक्सीन है जिसमें आपने क्या किया है, जैसे कोविड वैक्सीन में आपने क्या किया कि कोविड को किल कर दिया, नॉन पैथोजेनिक बना दिया, आपकी बॉडी में गया वो, आपकी बॉडी ने उसको सेंस किया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, तो यू गॉट द प्रोटेक्शन। सो दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म। सो क्विकली इफ आई टेल अगेन, सो इम्यून सिस्टम्स में there is a innate immune systems and adaptive. Quickly, adaptive immune system में your T and B cells play a major role and provide the specific immunity. Innate, it's a non-specific, right? And whenever any antigen enter in the body, which immune system will play a role? Innate immune system. Adaptive immune system will take time, right? So in this one, primary line defense, your skin and mucous membrane, your secondary line defense, there is a WBC, and third line defense, your T and B cells. So first these two will try to kill the pathogens, but if it's not killed, that pathogen will be presented to the adaptive immune system by the antigen presenting cells by the specialized mechanism like MSC, major histocompatibility complex. If your antigen is cached by MSC2, the antigen will be presented to the helper T cells. If it's cached by 1, then it will be presented to the cytotoxic T cells. And these undergo the process of clonal expansion. They will release lot of cytokines. The purpose of release of cytokines to kill the pathogens which enter in your body. Meantime, these released cytokines will also activate your B cells into the plasma cells and produce the antibody against it. So that is your specific immunities, where we talk about T and B cells, whereas non-specific immunities we talk about skin, mucous membrane and WBC. So this is brief about your immune systems. Thank you.